जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आई एस PT 365 में, जिसमें लोग पॉलिटी करने वाले हैं। तो यह एक मास्टर वीडियो होगा जो कि करीब 2.5-3 घंटे का होगा। तो आप लोग बस पूरा देखिए और इसमें हम लोग आधा से ज़्यादा बुक कंप्लीट कर देंगे एक ही मास्टर वीडियो में, और यह 2 पार्ट में आएगा। तो आप लोग बस हमारे साथ मास्टर वीडियो में जुड़े रहें। बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और मास्टर वीडियो पूरा देखें। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकेगा और यार लास्ट टाइम में रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी यह वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आइए शुरू करते हैं मास्टर वीडियो। आप बस हमारे साथ बने रहे और ये हमारे पिछले 2-3 वीडियो का कंपाइलेशन होगा। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए और देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अपना मास्टर वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फॉर यू में। और इसमें हम लोग का जो इतने देर से वेट कर रहे थे विजन IAS का PT 365 पॉलिटी, वो आ चुका है, जो अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा कंपाइलेशन है। और इसे अब हम लोग करने वाले हैं। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम लोग पूरा का पूरा ये कंपाइलेशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक 1 से, जिसमें इशूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं और हम लोग यह पूरा का पूरा बुक खत्म करने वाले, इतना भी इसमें इशूज़ जो भी टॉपिक्स दिए हुए यहाँ 8.8 तक। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि हम लोग कैसे इसे कंप्लीट करते हैं। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो विजन 365 PT पढ़ना चाह रहे थे या उन्हें इस चीज़ की डिमांड थी। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो सके। और इसे हम पूरा कंप्लीट करने वाले। इसे क्या मतलब, आने वाले जितने भी PT 365 होंगे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, तो सारे कंप्लीट करने वाले। तो बस हमारे साथ चैनल में बने रहें। और अगर आप लोगों ने वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर वाला सीरीज़ नहीं देखा तो वो भी देख ले, वो भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और उसमें भी रेगुलर वीडियो जा रहा है करंट अफेयर का, तो उसे भी आप लोग देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है इशूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पहला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो वाई इन द न्यूज़ द लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट 1973 विच प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंप्लीटेड 50 ईयर्स। तो इसके 50 साल पूरे हो गए थे। अबाउट द केशवानंद भारती केस 1973, इट डेल्ट विथ ए पिटिशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन of land by the Kerala government under the Kerala Land Reform Act 1963 as a violation of fundamental rights FRs under Article 25, 26 and 31 of the Constitution. The case was headed by the largest ever bench, that is 13 judge bench of the Supreme Court. Key outcomes क्या था? तो introduction of basic structure doctrine, upholding the validity of 24th constitutional amendment. The Supreme Court held that Parliament has the power to amend any or all provisions of the Constitution, including fundamental rights. However, such amendment should not alter, damage, or destroy the essential features of the basic structure of the Constitution. Earlier, in Gokhlanand case 1967, the Supreme Court held that the power to amend the Constitution under Article 368 was not unlimited, and that the fundamental rights guaranteed under the Constitution could not be abrogated or abrogated by the constitutional amendment. Power of judicial review क्या हो रहा है इसमें, तो देखते हैं। The court held that the power of judicial review is an integral part of the basic structure of the constitution. Other judgment में क्या आया, तो Supreme Court upheld the 25th and 29th constitutional amendment except for the parts that curtailed its power of judicial review and asserts that the preamble is a part of the constitution and hence amendable. About basic structure doctrine क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। It holds that certain fundamental features of the constitution cannot be amended or abrogated by the parliament. There is no mention of the term basic structure anywhere in the Constitution of India. Significance of doctrine क्या है, तो check on the power of parliament to amend the constitution, ensure that the constitution remains a living document that is responsible to changing time while preserving its fundamental values and principles. Lay down several principles that have become the bedrock of constitutional law in India, such as the rule of law, separation of power, and the independence of the judiciary. Ensures that the federal structure of the constitution is not undermined. Shapes the judiciary approach. The constitutional interpretation. बॉक्स में देख लेते क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे इवॉल्व हो उसके बारे में है। तो पहला है AK गोपालन केस 1973, ठीक है। फिर है शंकरी प्रसाद केस 1951, फिर है 1965 में सज्जन सिंह केस, फिर 1967 गोलकनाथ केस और 1971 केशवानंद केस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं
AK गोपालन केस, फिर शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था। फिर गोलकनाथ केस में क्या हुआ, तो आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर एनी अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट था। फिर फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ये हुआ। फिर 1971 में हुआ गया, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर लिमिटेड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें देखें तो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, तो ये पास हो गया कि पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकता है। और दूसरा क्या था 25th में, तो सेक्शन 2 कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विथ ड्यू कंपनसेशन, एंड सेक्शन 3 प्रोसीडेंस ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो DPSP को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई फंडामेंटल राइट्स पे। took away a space of judicial review from 39B and 39C, 39B और 39C से जुडिशियल रिव्यू को हटाया गया। और उसी में 1973 में कृष्ण भारती केस आया। अगला सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो कुछ प्रिंसिपल कौन कौन से देख लेते हैं। पहला सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, सेकंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्स to the citizen. Next is mandate to build a welfare state. Next, supremacy of the constitution. Next, republican and democratic form of government. Next, a secular and federal character of the constitution. अगला है separation of power between the legislature, executive and judiciary. अगला unity and integrity of the nation. Next is power of judicial review and last is harmony and balance between fundamental right and DPSP. तो और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। Our next topic, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, वाई इन द न्यूज़, तो सुप्रीम कोर्ट इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस स्टैंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मोर इन द न्यूज़ में क्या था, इट ऑल्सो हाईलाइटेड अदर प्रिंसिपल्स। पहला जिसमें इंटीग्रेशन टू टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। Separation of power. Officers of the judiciary should be treated separately from staff of legislature and executive beings. Unified judiciary में क्या है, तो service condition of judges for similar posts are equivalent across states. District judiciary क्या है, तो district judge is the highest judiciary authority in the district. Organizational structure, jurisdiction and nomenclature or subordinate judiciary are laid down by states, hence that they differ slightly from a state to state, broadly 3 tiers below the high court. अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। लॉ जुडिशरी में यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट होता है, उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। तो इसमें दो तरह का होता है, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में देखते हैं तो उसमें होता है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, फिर होता है मुंसिफ जज कोर्ट, और क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो भाई इन न्यूज़ में क्यों आया, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स 2019 डिसीजन टू रिपेल द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो ऑन August 5, 2019 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोलगेटेड एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट टू जम्मू application to Jammu and Kashmir Order 2019, which stated that provision of Indian Constitution are applicable in the state. Parliament also enacted the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which bifurcated the state into 2 union territories. The petitioners have challenged the constitutionality of this action of the union. Judgment क्या आया इस पे, तो upholding the presidential proclamation of August 2019. The Supreme Court held that Jammu and Kashmir did not retain any element of sovereignty after it acceded to India in 1947. Supreme Court held that Article 370 is a temporary transitional provision. The court held that UT can be carved out of a state. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or part of a state by uniting any territory to a part of any state. According to explanation 1 to Article 3, the word state are used in Article 3 Clause A include a union territory. Relying on the judgment in SR Bommai case, Supreme Court held that actions of President during a state emergency
were open to judicial scrutiny. आर्टिकल 370 हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या है देख लेते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA in October 1947, महाराजा हरि सिंह, the last ruler of Jammu and Kashmir, signed the IOA, through which he agreed to accede his state to the dominion of India. Temporary provision for Jammu and Kashmir क्या था? तो under the constitution, article 370 was placed in part 21 titled temporary and transitional provision. Article 370, except for defense, foreign affairs, finance and communications, Parliament needed the state government's concurrence to apply for all other laws. Article 35A of Indian Constitution, it streamlined out of Article 370 and gave power to Jammu and Kashmir Assembly to define permanent residents of the state, their special rights and privileges. आर्टिकल 3 में क्या था? तो इट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर of areas, boundary or names of existing states. First proviso of the article states that bill for above law shall be introduced in either house of parliament on the recommendation of president. If the bill affects the area, boundaries or name of any state, the president must refer the bill to the state legislature for its view. अगला टॉपिक है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो न्यूज़ में क्यों रहा? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. की हाइलाइट्स ऑफ द NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है? द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCA it creates a new statutory authority NCCSA to make recommendations to Lieutenant Governor LG regarding transfer, posting, vigilance and other incidental matters. NCCSA shall be decided matters by the majority of voters of the member present and voting. The central government will appoint both the principal secretary and chief secretary. Power of the LG matters whether the LG may act solely or his discretion are matters outside the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly but which has been delegated to Lieutenant Governor, or matters where he or she is required by law to act in his discretion or exercise any judicial or quasi-judicial function. Primacy to LG क्या है? तो it expand the discretionary role of LG by giving him power to approve the recommendation of the NCCSA or return them for reconsideration. The LG's decision will be final in case of difference of opinion between him and the authority. Disposal of matters by ministers. Certain matter must be submitted to the LGs by the ministers of Delhi government through the chief minister and the chief secretary for his or her opinion prior to the issue of any order. This includes proposal affecting क्या क्या है? तो द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिल्ली, relation between the Delhi government and the central government, Supreme Court or other state governments, summoning, prorogation and dissolution of the legislative assembly, and matter on which LG is to give an order in his sole discretion. The governance model of Delhi NCT क्या है देख लेते हैं. Classification as a union territory UT under the States Reorganization Act of 1956. Delhi was classified as a UT, governed under Article 239 of the Constitution. It states that UT are directly governed by the President or an administrator appointed by the President. Special status क्या था? तो following the recommendation of S. Balakrishnan Committee, the 69th Constitutional Amendment Act of 1991 conferred a special status of Delhi and designated it as a National Capital Territory of Delhi NCTD. It added Article 239AA to the Constitution and made Delhi a UT with a legislature and a council of ministers. The Lieutenant Governor LG is designated as the administrator of Delhi, operating with the aid and advice of the Council of Ministers of Delhi. Power of Delhi Legislature. The Delhi Legislative Assembly has the power to legislate over subjects in the state list and concurrent list, except for police, public order and land. Also, Parliament can legislate over all matters in the state and concurrent list related to Delhi. GNCTD Act, the Government of National Capital Territory of Delhi. GNCTD Act 1991 laid down the framework for the functioning of Delhi Assembly and the Delhi government.
यहाँ पे देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ NCCSA। इसमें क्या, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज चेयरपर्सन, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज अ मेंबर। फिर एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट देखते हैं कैसे कैसे। तो 1951 में हुआ दिल्ली मेड ए पार्ट सी स्टेट। फिर 1952 में हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली LA वाज क्रिएटेड विथ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। 1956 में हुआ अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिल्ली became a UT. 1966 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। फिर 1991 में हुआ 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड GNCTD एक्ट 1991 पास्ड। 2021 में GNCT अमेंडमेंट एक्ट 2021। Our next topic is preventive detention. Why in news? The Supreme Court, while setting aside a detention order, observed preventive detention law are a colonial legacy and they must be used only in rarest of the rare case. About preventive detention, तो क्या है, तो preventive detention means detention of a person without trial and conviction by a court on a mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to public order. Its purpose is to prevent the person from committing an offence in the near future. Protection against arrest and detention under Article 22 Clause 1 and Article 22 Clause 2 is not available to a person arrested or detained under preventive detention law. Article 22 Clause 3. Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the defence, foreign affairs and security of India. Both Parliament as well as state legislators can concurrently make a law for reasons connected with the security of a state, maintenance of public order and maintenance of supply and services. Multiple laws such as Code of Criminal Procedure, Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act NDPS 1985, Unlawful Activity Prevention Act etc. permit preventive detention. Constitutional provision related to preventive detention and judicial pronouncement related to preventive detention. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ground of arrest, nor shall be detained right to consult or be defended by legal practitioners. Article 22 Clause 2, every person who is arrested, detained in custody shall be produced before magistrate within 24 hours of such an arrest. Article 22 Clause 3, above two clauses will not apply to a person who is detained in accordance to a law providing for a preventive detention. Article 22 Clause 4, no person can be detained for more than a period of 3 months unless an advisory board confirms that there is sufficient clause for continuation of such detention. Article 22 Clause 7, a person can be preventive detained for more than 3 months without option of any advisory board if Parliament by law provide maximum period of such detention and circumstances, classes of person and classes of case to which such a law may apply. अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या क्या देख लेते हैं। तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, द कोर्ट गेव अ ग्रीन फ्लैग टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1953। अगला है सुबिनान लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट ए कोर्ट रूम इज नॉट competent to inquire into reality or in any case of the fact which are referended as ground of detention. Sambhunath Shankar versus State of West Bengal, court held that sometimes state must take such extreme step to maintain the security of the country. अगला टॉपिक है पर्सनैलिटी राइट्स। न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू अ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स पर्सनैलिटी राइट फ्रॉम मिसयूज बाय थर्ड पार्टीज। अबाउट पर्सनैलिटी राइट क्या है, तो पर्सनैलिटी राइट्स रिफर्स टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी अंडर द राइट to privacy or property. It include name, voice, signature, image or any other feature easily identified as maker of personality. Personality rights in India. Personality rights or their protection are not expressly mentioned in any statute in India but are traced to fall under the right to privacy and the right to property. Two components of personality rights.
Right to publicity, right to keep one's image and likeness from being commercially exploited without permission. It is governed by statutes like the Trademark Act of 1999 and the Copyright Act of 1957. Right to privacy, right to have right to not have one's personality representative publicity publicly without permission. It is broadly governed under Article 21 of the Constitution and the Supreme Court judgment in Justice K.S. Puttaswamy retired case 2018. Posthumous personality rights, emblems and names, prevention of improper use Act 1950 protects unauthorized use of a few dignitaries' name and symbol listed in its schedule. IPC. If negative reference or derogatory representation is made to any decreased person's reputation to or their family, a defamation suit can filed under the Indian Penal Code. Personality rights under International Convention. There is no explicit international convention or treaty on protection of the publicity right to date. However, certain publicity right can be derived from the following international conventions. Pala Rome Convention 1961. It protects performers' right, phonogram producers' right, and broadcasting rights. TRIPS Agreement 1994. It secured certain rights of the phonogram producer, live performer, and broadcast rights. WIPO Reference and Phonogram Treaty WPPT. It protects the right of performer and phonogram producer, particularly in digital environment. Constitutional provisions related to personality rights and judicial pronouncement related to personality rights. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं. तो आर्टिकल 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. आर्टिकल 300 में क्या है देख लेते हैं. 300A titled as right to property was introduced by 44th Amendment Act 1978 of the Constitution Act of India. It states that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू पर्सनालिटी राइट्स क्या है. तो दीपा जय कुमार वर्सेस अल विजय केस 2019 मद्रास हाईकोर्ट हेल्ड दैट पर्सनालिटी राइट्स cease to exist after the death of the personality and cannot be inherited by legal heir. Sakshi Malik versus Venkateshwara Creations Private Limited and ORS case. Bombay High Court held that using another's image and must especially a private image without consult is illegal. Our next topic is hate speech. तो ये न्यूज़ में क्यों आ गया. तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द need of stakeholder to find a long-term solution to the problem of hate speech. About hate speech क्या है. तो hate speech have not been defined in any law in India. However, hate speech generally refers to incitement to hately primarily against a group of person. Hate speech can be conveyed through any form of expression, including image, cartoons, memes, objects, gesture and symbols, and it can be disseminated offline or online. Regulation of hate speech in India. Constitutional provision क्या क्या है. तो hate speech can be curtailed under Article 19 Clause 2 on the ground of public order, incitement to offense and security of the state. भारतीय न्याय संहिता 2023 Section 196 Clause 1 penalizes promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. Section 299 defines punishment for deliberate and malicious act intended to outrage the religious feeling of any class. Section 235 Clause 1 and Clause 2 penalize the publication of circulation of any statement, rumor or report causing public mischief and enmity, hatred or ill will between classes. Representation of People Act 1951. Section 8 disqualifies a person from contesting an election if he is convicted for indulging in acts
amounting to legitimate use of freedom of speech and expression. Section 123, Clause 3A and Section 125 prohibit the promotion of enmity on the ground of religion, race, caste, community, or language in connection with election as a corrupt electoral practices. Protection of Civil Rights Act 1955. Section 5 penalize incitement to any encroachment of encouragement of untouchability through words either spoke or written or by sign, visual representation or otherwise. Religious Institution Prevention of Misuse Act 1988. Section 3 Clause G prohibits religious institutions or their managers from using religious premises to promote disharmony or hatred among various religious groups. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू हेट स्पीच में क्या क्या है, तो प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, द कोर्ट रिकॉग्नाइजेज द नेगेटिव impact of hate speech refer to matter to the Law Commission for in-depth examination. Shreya Singh versus Union of India 2015. Supreme Court held that responsible restriction under Article 19 Clause 2 on free speech and expression may be imposed only if it incited violence or led to public disorder. Amish Devgan versus Union of India 2020. Supreme Court highlighted the need to balance the competing interest of free speech and prevent the spread of hatred and communal disharmony. अगला टॉपिक है Places of Worship Act 1991. Why news? The Supreme Court observed that it cannot order a blanket stay on Worship Act. Please. About place of worship, a special provision Act 1991. The Act declares that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it was on August 15, 1947. It says no person shall convert any place of worship of any religious denomination into one of a different denomination or section. It also imposes a positive obligation on the state to maintain the religious character of every place of worship, and it existed at the time of independence. It declares that all suits, appeals, or any other proceeding regarding converting the character of a place of worship which are pending before any court of authority on 15th August 1947 bill abate as soon as the law comes into force. Exemption provided. तो कौन कौन सा था? The dispute site of Ayodhya is exempted from the Act. The Act also does not apply to monuments and sites covered by the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. Any dispute that has been finally settled or disposed of, any conversion of any such place effected before such commemoration by executions. Penalty. Section 6 of the Act prescribed a punishment for a maximum of 3 year imprisonment along with a fine for contravening the provision of the Act. अगला है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट था देख लेते हैं. तो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Odisha cabinet has proposed for the inclusion of Kui language in the 8th schedule. Schedule 8 of the Indian Constitution. It enlisted the official language of the country and consists of 22 languages currently. 14 languages were originally listed in the Constitution and the rest were added over time. Sindhi was introduced by the 21st Amendment Act of 1967. Konkani, Manipuri and Nepali by the 71st Amendment Act of 1992 and Sinthali, Dogri, Maithili and Bodo by the 92nd Amendment Act of 2023. Schedule 8 benefits. Support from government to develop recognition from Sahitya Academy and wider translation of its book can be used in assembly and parliamentary debate, can be used in all India competitive exam, RBI to include it in currency note denomination. 9th schedule of the Constitution. It was added to the Constitution by first Constitutional Amendment 1951 under Article 13(1)(v). Central and state laws included in 9th schedule cannot be challenged in court for validation of fundamental rights. However, Supreme Court in IR
Koleo versus State of Tamil Nadu 2007 ruled that any law added to the 9th schedule after April 24, 1973 violating fundamental rights can be challenged if it undermined the basic structure as outlined in Article 21 along the Article 14 and 19. अगला टॉपिक था राइट टू साइलेंस. Supreme Court said that all accused have a right to silence and investigator cannot force them to speak up or admit guilty. Right to silence emanates from Article 20 Clause 3 which states that no one can be compelled to be a witness against himself. Protection is limited only to criminal proceedings. Right is not available to a person being interrogated under Custom Act 1962 or Foreign Exchange Management Act 1999. Such the person is not accused of an offence and isn't entitled to a lawyer. In Nandini Sethpati VPL Dani case, Supreme Court stated that compelling a person to answer a question within the limit of police station may result in a violation of Article 20 Clause 3. Reservation for local in private sector. Punjab and Haryana Court quashed Haryana State Employment of Local Candidate Act 2020. Act provided 70% reservation to local in private sector jobs having monthly salary of less than 30,000 rupees. High Court declared it unconstitutional and violative of Part 3 Fundamental Rights of the Constitution of India. It also said that Act violates constitutional morality. Constitutional morality refers to adherence to the fundamental principle of the Constitution. It said state cannot discriminate against the individual on account of the fact that they do not belong to a certain state. Negative discrimination. Other states like Andhra Pradesh 2019 have also enacted similar act. अगला टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन मीन पॉजिटिव एक्शन या डिस्क्रिमिनेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन US to counter historical patterns of prejudice against individuals which contain identities, that is black, Hispanic and other minority student. Reservation is a system of affirmative action in India that provide historically disadvantaged group representation in education, employment, government schemes, scholarship and policies. Article 15 Clause 4 and Article 16 Clause 4 allow the government to provide for reservation. Reservation quota fixed at 50% Indira Savai judgment for OBC, SC and ST in both employment and education. Ranganath Mishra Commission. About Ranganath Mishra Commission क्या है तो it is officially known as National Commission for Religious and Linguistic Minorities. It was constituted to look into various issues related to linguistic and religious minorities in the country. Reports by Commission 2007 recommended that scheduled caste status be completely declined from religious and made religious neutral like STs. It has recommended permitting Dalits who converted into Islam and Christianity to avail scheduled caste status. Article 355. Article 355 is a part of emergency provision contained in Part 18 of the Constitution from Article 352 to 360. Article 355 says that it shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that government of every state is carried on in accordance with provision of this Constitution. Right to walk. Punjab has become the first state to implement the right to walk. Right to walk make it mandatory for all road owning agencies, including the NHAI, to provide footpath and cycle track on the road. तो हमारा पहला सेक्शन खत्म हो गया. अब दूसरा सेक्शन शुरू होने वाला है. फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर एंड लोकल गवर्नमेंट. उसमें पहला टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन. वाई इन न्यूज़, तो क्यों रहा न्यूज़ में? Union government faced a no confidence motion in the monsoon session of the parliament. About no confidence motion, the no confidence motion, a legislative resolution introduced in the Lok Sabha that allows the opposition to challenge the government majority. If a no confidence motion is passed, the government of the day will have to resign.
The motion of no confidence can only be moved in Lok Sabha. Constitutional article या rules of the business in Lok Sabha. Article 75 clause 3 the constitution of ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. Similarly, at the state level, Article 164 clause 2 provide the council of ministers provided that council of ministers shall be collectively responsible to the state legislative assembly. Rule 198 of rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha provides a provision regarding the motion of no confidence. Grounds क्या क्या है तो a motion of no confidence need not set out any ground on which it is based. Speeches unless leave is granted by the house to move the motion, no speech is permitted in support of the motion. Repeat motion क्या है तो after a no confidence motion has been discussed and negated by the house, another no confidence motion cannot be moved in the same session. Usual process for a no confidence motion, तो क्या क्या प्रोसेस है देखते हैं. पहला है हाउस एक्सप्रेसेस इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फिर स्पीकर एग्जामिन इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन ऑर्डर. देन द मेंबर हु हैज टेबल्ड द मोशन acts asks for leave of the house to move the motion. Next, speaker then call upon members who are in favor of leave being granted. If not less than 50 member rises, the speaker declare that leave is granted by the house. The motion is then taken up for discussion within 10 days from the date of the grant of leave. अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लैंड मेकर्स. तो न्यूज़ में क्यों रहा तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट सेट अप अ 7 जज बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स 1998 जजमेंट इन द पीवी नरसिम्हा राव केस. मोर इन न्यूज़ में क्या है तो पीवी नरसिम्हा राव केस जजमेंट केम इन द बैकड्रॉप ऑफ 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा भिरवरी केस. It upheld legal immunity granted to legislator against criminal prosecution on bribery charge for any speech or vote in parliament as per Article 105 clause 2 and 192 clause 2 of the Constitution. About parliamentary privileges, it referred to legal immunity wherein legislators are granted protection against civil or criminal liability for certain action or statements made in course of their legislative duties. If an individual or authority undermines a parliamentary privilege of a member of the house, it is called the breach of privilege. Parliament till now has not made any special law to exhaustively codify all the privileges. Parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach or contempt of the house. No court is entrusted with this power. A member of house can raise a question involving a breach of privileges with the consent of the chairman or speaker. Privileges are based on 5 sources. तो कौन कौन सा सोर्स है तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. आर्टिकल 105 उसमें पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड कमिटीज. आर्टिकल 194 पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर एंड their members and committees. Article 105 clause 2 no person shall be liable in respect of the publication of any report, paper, votes or proceeding by or under the authority of each house of the parliament. A similar provision exists for members of the legislature of the state under Article 192 clause 2. Freedom of speech in Parliament. Article 105 clause 2 states that no member is liable to any proceeding in any court for anything said or any vote given by him in Parliament or its committee. The freedom is subject to the provision of the Constitution. Example, Article 121 restricts the member from discussing judges' conduct and to the rules and procedures of the Parliament under Article 118. Article 122 restricts the court from inquiring into the validity of any proceeding of Parliament on the ground of alleged irregularity of the procedure.
Law made by Parliament. Freedom from arrest. Code of Civil Procedure 1908 provides legislator freedom from arrest in any civil case 40 days before and after the adjournment of the House and also during the session of the House. However, an MP doesn't enjoy any such immunity in a criminal case. Rules of both the House. Privileges based on rules of procedure and precedents. Parliament reserve the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment, and release of a member on a criminal charge or for a criminal offense. Right to exclude strangers. House has the power to right to exclude a stranger from the proceedings. The right is essential for securing free and fair discussion in the House. अदर सोर्स में क्या है तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में क्या आता है तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम breach of privileges. It is an act of omission which obstruct or has the tendency to obstruct either House of Parliament or its members, officers in the performance or their function. Parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach or contempt of the House. No court is entrusted with this power. House can commit an offender to custody or prison the contempt for a period limited to the duration of the House session. In case if an MP is found guilty, he can be suspended from the House or face expulsion. Rationale behind parliamentary privileges. तो क्या क्या था तो ensure freedom of expression of the legislator without fear of legal consequences. Ensure attendance of the parliamentary session. Maintain the authority dignity of legislator. Carry out functions independently and effectively of both the houses without any interference. Parliamentary privileges क्या क्या है तो it is parliamentary standing committee present in both the House of Parliament. Consist of 15 members in Lok Sabha and 10 in case of Raj Sabha nominated by the Speaker, Chairman in case of Raj Sabha. Key function क्या तो investigate questions involving the breach of privileges of House or members are referred to it by presiding officer of houses. Next topic is explosion of lawmaker. तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद है कि आपको हमारा यह पहल अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. यह पूरा सीरीज़ चलने वाला है तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसे भी देखें. और इसके डिस्क्रिप्शन में वाजीराम एंड रवि की करंट अफेयर का भी पूरा कंपाइलेशन है तो उसे भी देखिए. उसका वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है और वीडियो कंटिन्यू है उसका भी तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखें. इसे भी देखें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमेशा जुड़े रहें क्योंकि बहुत सारा मटेरियल यूपीएससी का हम लोग देने वाले हैं जो आपको शायद ही कहीं एक जगह पर सारा मटेरियल मिल सके. तो बस हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा बीते. तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS पीडी 365 सीरीज में. जो लोग पॉलिटी कर रहे हैं अभी इसी का आया तो यही कर रहे हैं जो अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का पूरा क्लासरूम स्टडी मटेरियल है. और यह बहुत सारे लोगों का मतलब वेट हो रहा था इसका कि कब आए और कब हम लोग शुरू करें. मेरा भी यही वेट हो रहा था. आज हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक में जाने वाले हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स में हम लोग चल रहे थे तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. यह सेकंड वीडियो लेक्चर होगा तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले का देखा होगा. अगर नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसी में आपको विजन वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा. वो भी देखिए, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा सीरीज़ है और हम लोगों ने सारे वीडियोस बना रहे हैं और अपलोड भी चल रहा है, रेगुलर चल रहा है. तो आप लोग उसे भी देखिए और उससे भी अपना रिवीजन और मौजूद कीजिए. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक. मगर शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जैसे कि आपको भी जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम मतलब ये UPSC CSE होने से पहले हम लोग काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड करने वाले हैं इस पर. तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए. आइए शुरू करते हैं. आज से हमारा यहाँ टॉपिक होगा आज का एक्सप्लोजन ऑफ लॉ मेकर्स.
Why in the news? Recently, Lok Sabha has expelled one of its members accused of accepting gifts and illegal gratification based on the Ethics Committee report. Explosion of lawmaker in India. It can be done on a constitutional as well as legal rules of the House basis. The constitutional basis of exclusion. An MP found guilty of breach of privileges or contempt of the House can be suspended from the House or face exclusion. A simple majority is needed to pass a motion of exclusion in each House. Further, involvement of ethics committee is not always necessary for exclusion. लीगल बेसिस ऑफ सस्पेंशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एमपीज क्या क्या देख लेते हैं. टू इन्हांस स्मूथ प्रोसीडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर टू फोर्स अ मेंबर टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस. इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम misconduct, the house may expel a member to read the house of person who are unfit for membership. यहाँ पे एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा क्या है, तो इट कंसिस्ट of not more than 15 members nominated by the speaker and shall hold office for a term not exceeding 1 year. Functions क्या है, to examine a complaint relating to the unethical condition of a member referred to it by the speaker, make recommendation and formulate a code of conduct for members, suggest amendment to the code of conduct. The first ethics committee of Lok Sabha was set up in 2000 and of Rajya Sabha in 1997. यहाँ पे क्या, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू सस्पेंशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा पहले देखते हैं कि लोकसभा में क्या है. तो रूल 373, इट एम्पावर्ड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू ऑर्डर एन एमपी टू विथड्रॉ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग. फिर रूल 374 क्या है, तो अलाउज टू सस्पेंड द एमपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सस्पेंशन. रूल 374 A क्या है, तो brought in 2001 allow the speaker to name an MP who will then automatically stand suspended for 5 days or the remaining part of the session, whichever is less. और उसी तरह से रूल इन राज्यसभा देख लेते क्या है, तो रूल 255, it allows the chairman to direct any member to withdraw immediately from the house for disorderly conduct. Rule 256, house may adopt a motion suspending the member disregarding chair's authority or abusing the rules for a period not exceeding the remainder of the session. Unlike the Lok Sabha, under Rule 374A, the Rajya Sabha cannot suspend its member without passing a motion. Article 122 क्या है of the Constitution says, क्या बोलता है, parliamentary proceeding including those related to exclusion can't be questioned by the judiciary, although the court have intervened in some cases. In the Raja Rampal case 2007, the court upheld the exclusion of Raja Rampal but noted that proceeding tainted by substantial illegality are open to judicial scrutiny. Exclusion and disqualification are not the same. The Constitution provides for both exclusion and disqualification. Under disqualification, member of the parliament cannot contest the election further, while under exclusion he or she can. Disqualification of a lawmaker. RPA 1951, under section 8 clause 4, a lawmaker is disqualified for the period of imprisonment and a further 6 years if sentenced for 2 years or more in prison. 10th schedule of the Constitution provides for the disqualification on ground of defection. Article 102 clause 1 and Article 191 clause 1 for disqualification of a MP and a MLA respectively on grounds of holding an office of profit, being of unsound mind or insolvent or not having valid citizenship. अगला हेडिंग है एंटी डिफेक्शन लॉ. तो क्या है, वाई न्यूज़, तो महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटिशन सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड अंडर द 10th शेड्यूल via the 52nd Amendment Act of 1985. Any question regarding disqualification arising out of defection is to be declared by the presiding officer of the House. Disqualification happens if a member voluntarily give up his party membership or
votes abstain to vote in the House contrary to the direction issued by his political party, and such act has not been condemned by the party within 15 days. An independent member becomes disqualified if he or she joins any political party after such an election. A nominated member becomes disqualified if she or he joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he has taken a seat. Exception क्या है? तो law allows a political party to merge with or into another party provided that 2/3 of its total legislators are in favor. If a person is elected as a speaker of Lok Sabha, deputy speaker and deputy chairman of Rajya Sabha, then he could resign from his party and rejoin the party once he or she dims the post. Presently, the law does not provide a time limit within which the presiding officer have to decide on the anti-defection case. विप क्या? तो विप देख लेते हैं. रूल 2 of the anti-defection law puts the party member into a bracket of obedience to the party whip and policies. In parliament parlances, a whip may refers to क्या है? तो a written order for party member to follow a certain direction and a designated official to the party who is authorized to issue such a direction. The term originates from the British practice of whipping in. Lawmaker is follow the party line. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू 10th शेड्यूल क्या क्या? तो देख लेते हैं. क्योटो होलोहल वर्सेज जिंजुलू 1992. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्पीकर्स डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. और उसी तरह से केशम मेगा चंद्र सिंह 2020 केस. सुप्रीम court ruled that disqualification petition under the 10th schedule should normally be decided within a period of 3 months from the date of their filing. Supreme Court also noted the issue of partisan behavior on the part of speakers due to their political allegiance and suggested a permanent tribunal to decide case under 10th schedule. अगला वाला टॉपिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. तो क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? वाई न्यूज़ में क्यों आया देख लेते हैं. A recent analysis showing that the number of ordinances issued by the president has dropped since 2019. In 2022, for the first time in 59 years, no ordinances were promulgated. Ordinance making power of the president and governor. Ordinances are temporary law which can be issued by the president when parliament is not in session. Power to promulgate the ordinance can be traced from Indian Council Act of 1861, the Government of India Act GOI Act 1909 and the Government of India Act of 1935. The ordinance is listed under Article 123, power of President to promulgate ordinance during recess of Parliament, and Article 213, power of Governor to promulgate ordinance during recess of legislature. These promulgated ordinances have the same force and effect as an act of legislature, but these acts are likely in temporary nature. An ordinance ceases to operate at the expiration of 6 weeks from the date when the next session starts. If the two houses start their session on different dates, the latter of the date will be considered. The ordinance may lapse earlier if the president or governor withdraw it or if both houses passes a resolution disapproving it. In case of a state legislature, resolution disapproving it is passed by legislative assembly and agreed to by the legislative council if any. Ordinance can only be issued on matter on which parliament or legislature can make laws and are subject to same limitation as parliament legislature to make laws. However, the governor of a state cannot make an ordinance without the reference of the president in the following case. तो कौन कौन सा केस है देख लेते हैं. पहला, if bills containing similar provision would have required the prior sanction of the president for introduction in the assembly. दूसरा, if governor would have deemed it necessary to reserve a bill containing similar provision for consideration of the president. और तीसरा, if an act of a state legislature containing the same provision would have been invalid without receiving the president's assent. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस क्या क्या देख लेते हैं. तो आरपी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इसमें बोला था अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट्स डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ
immediate action was not required, and the ordinance had been passed primarily to bypass debate and discussion in the legislature. DC Wadhwa versus State of Bihar 1987. Court held that legislative power of executive to promulgate ordinance is to be used in exceptional circumstances and not as a substantiate for law making power of the legislator. अगला है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994. Court held that the satisfaction of the President under Article 123 and Governor under Article 213 while issuing an ordinance is not immune from judicial review. अगला टॉपिक है सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट. न्यूज़ में क्यों रहा? तो एज द पार्लियामेंट कंप्लीट 75 years, the parliament secretariat have been the custodian of procedure, precedent and legislative knowledge of the two houses. Constitutional provision क्या है? तो आर्टिकल 98, each house of parliament shall have a separate secretariat staff. Parliament may by law regulate the recruitment and the condition of service of person appointed to the secretariat staff of either house. However, so far no such law has been passed. It also allows the creation of posts common to both the House of Parliament. Article 187 makes similar provision for the Secretariat of State Legislature, Council of State Secretariat and Parliament Secretariat for House of the People were set up when both houses came into existence in 1952. Their names were changed in 1954 to Rajya Sabha Secretariat and Lok Sabha Secretariat respectively. The Secretariat of both houses has been divided into 10 services on a function basis like legislative, executive, administrative, verbatim, reporting service, etc. Speaker and chairman can create new posts in respective secretariat. However, the post in class 1 or class 2 prior consultation with the Union Ministry of Finance is mandatory. Secretary General of both houses hold rank equivalent to that of Cabinet Secretary. However, in the table of precedence, the Cabinet Secretary is placed at the 11th position, whereas the Secretary Lok Sabha या Rajya Sabha are placed at the 23rd position. फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट क्या है देख लेते हैं. तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंस, सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटी. सेक्रेटरी जनरल एड एंड एडवाइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, prepare research and reference material and bring out various publications, prepare and publish a record of the day-to-day proceedings of the house. स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट क्या है? तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट देखते हैं पहले. स्पीकर लोकसभा वेस्टेड विथ अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटेरिएट. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? सेक्रेटरी जनरल. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा? तो गवर्नड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1955 प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद स्पीकर. उसी तरह से राज्यसभा सेक्रेटेरिएट देखते हैं. तो चेयरमैन राज्यसभा का वेस्टेड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सेक्रेटेरिएट. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्नड बाय द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1957 promulgated by the president in consultation with chairman, similar to लोक सभा. अगला टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. न्यूज़ में क्यों था? तो द ईयर 2023 मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ द 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. It refers to the devolution of power, resource and decision-making authority from the central government to the local government, such as panchayat and municipalities. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992 that came into force in 1993 introduced democratic decentralization in India. तो 73rd Constitutional Amendment Act 1992 क्या था? तो पंचायती राज institution was constitutionalized through the act. The act has added a new part 9 to the Constitution of India and consists of provision from Article 243 to 243O. It added a new 11th schedule to the Constitution that contained 29 functional items of the Panchayat. 74th Constitutional Amendment Act 1992 क्या था? तो urban local government were centralized
constitutionalized. It added Part 9A and consists of provision from Article 243P to 243ZG. It also added the 12th schedule to the constitution that contained 18 functional items of municipalities. Step taken to strengthen RPIs in India. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) for developing and strengthening the capacities of RPIs. E-Gram Swaraj, a user-friendly web-based portal that unifies the planning, accounting, and monitoring function of Gram Panchayat. People's Gram Campaign (PPC), Sabki Yojana Sabha Vikas. To draw up Gram Panchayat Development Plan (GPDPs). Backward Region Grant Fund (BRFGF). United funds are given for meeting critical gap in local infrastructure and development in some identified backward district. National Institute for Rural Development and Panchayati Raj, an autonomous organization under the Ministry of Rural Development for capacity building of rural development functionaries, local elected representative, banker, NGOs, etc. नेशनल पंचायत अवार्ड क्या है तो यूज अंडर दिस बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वेरियस क्रिटेरिया एंड इंडिकेटर्स. स्वामित्व स्कीम तो ये क्या है तो प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ऑनर एंड इश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑनर. इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमेटी कौन कौन सा तो देख लेते. पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957. दूसरा अशोक मेहता कमेटी 1977 1978. इसी तरह से अगला है CH हनुमंता राव वर्किंग ग्रुप 1983. फिर है GVK राव कमेटी 1985. अगला है LN सिंघवी कमेटी 1986 और फिर है तुंगन कमेटी 1988. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो न्यूज़ में क्यों रहा तो रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड Finances of Panchayati Raj Institution. The report discusses the physical position of PRIs for the year 2020-21 to 22-23. Constitutional provision to financial empowerment of Panchayat. क्या क्या है तो Article 243H provides to finance for the Panchayats by securing authorization from state legislature for grant in aid to the Panchayats for the consolidated fund of the state. It empowered panchayats to impose, collect and allocate taxes, duties, tolls and fees. Article 243I, setting up a state finance commission FCs every 5 years to review the financial position of panchayats and make recommendation to improve their financial position. Article 280 clause 3 subclause BB mandates Central Finance Commission to recommend measures needed to augment the consolidated fund of the state and supplement panchayat resources. Sources of finance for PRIs. Internal या own source of revenue. Tax revenue for property tax on land other than agricultural land or building or both. Taxes and on duties and commodities. Service tax, tax on profession, trade, etc. Non-tax revenue from market fee on persons exporting goods for sale in panchayat areas, fee in registration of cattle sold within the panchayat area, etc. अगला ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFCs एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC. सबसे पहला है टाइड ग्रांट्स आर मार्क्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस और सेक्टर लाइक सैनिटेशन, एजुकेशन, etc. United grants, general purpose grants. These are provided without specific condition or restriction and can be utilized for local need and priorities. Performance based grants, additional fund granted to PRIs based on recommendation of CFCs and specific performance criteria. अगला स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स. These grants are additional finance support designed to address unique challenge or particular needs of PRIs in a specific region or context. अगला अदर सोर्सेज. Transfer from central government and state government under different schemes like मनरेगा, PMI, रूलर्स, संसद आदर्श ग्राम योजना etc. Grants for international bodies like World Bank etc. अगला कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडीज ULBs. तो न्यूज़ में क्यों रहा
तो recently the Capacity Building Commission CBC in collaboration with MOHUA organized a national workshop on capacity building of ULBs to foster a unified approach to capacity building ULBs across India. More on news. The workshop marked the launch of three key initiatives, that is Annual Capacity Building Plan ACBP to enhance the capacities of MOHUA, ACBP 46 pilot ULBs कौन कौन सा कहाँ तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर एंड पुणे. Comprehensive toolkit for preparing capacity building plan for ULBs for providing valuable resource to facilitate the growth and development of ULBs. About urban local bodies. ULBs are small local bodies that administer or govern a city or a town of a specified population. Urban governance. Local government is part of a state list entry number 5 under the Constitution. Thus, the administrative framework and regulation of ULBs varies across states. Constitution 74th Amendment Act 1992 formally recognized urban local government as the third tier of government. The act provided for the establishment of three types of ULBs. पहला है नगर पंचायत for a transitional area, दूसरा है municipal council for a smaller urban area and तीसरा है municipal cooperatives for a larger urban area. अब देख लेते कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है. CBC तो जेनेसिस क्या है तो कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021. अबाउट तो इस्टेब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विथ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी. इट इज़ की कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB मिशन कर्मयोगी. सर्व्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. पर्पस क्या है तो टू बिल्ड credibility and shape a uniform approach to capacity building on a collaborative and co-sharing basis. Composition क्या है तो a chairperson and 2 members supported by an internal secretariat headed by secretary in the grant of joint secretary. Function क्या है तो coordinate with department of government for evolving a harmonious dissolute approach to improve capacity and build shared resources. Prepare annual HR report on health of civil services along the target achieved. Undertake audit of human resource available in government and access outcome of capacity building efforts. Measures taken for capacity building of ULBs. तो क्या है measures देख लेते हैं. National Urban Digital Mission launched in 2021 by MOHUA. It focuses on citizen-centric digital revolution in ULBs in India. It aims to create a shared digital infrastructure working across three pillars of people, processes and platform to provide a framework for digital governance in the country. National Institute of Urban Affairs NIUA has been appointed to anchor this mission. Established in 1976, NIUA is a premier institute for research, training and information dissemination in urban development and management. Municipal bonds क्या है तो these are financial institutions that municipal corporation and other associated bodies in India issued to raise fund. अगला हेडिंग है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996. न्यूज़ में क्यों था तो रिसेंटली झारखंड इश्यूड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पेसा एक्ट ड्राफ्ट रूल फॉर पब्लिक कंसल्टेशन. अबाउट पेसा एक्ट 1996 तो क्या है देख लेते हैं. बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द दिलीप सिंह बुरा कमेटी, द पेसा एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1996 फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम. इट प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत टू शेड्यूल एरिया ऑफ 10 स्टेट अंडर आर्टिकल 244 clause 1 read with schedule 5 with certain modification and expectations. PESA empower the state legislature to frame laws in this regard. Presently 10 state via कौन कौन सा तो देख लेते हैं. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना have 5th schedule area in their respective states. 8 states except Jharkhand and Odisha have framed and notified their state PESA rules under the respective state Panchayati Raj Act. The Ministry of Panchayati Raj is the nodal ministry for the implementation
of provision of PESA in the state. PESA Act is called a constitutional within the constitution. तो मेजर पावर ऑफ ग्राम सभा अंडर पेशा देख लेते हैं कौन कौन सा. तो पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन अ मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलियनाइजेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर alienated land, to control institutions and functionaries in all social sector and local plans, to manage minor water bodies, ownership of minor forest produce, regulate and restrict sale consumption of liquor, manage village market, control money leading to scheduled tribes, resettlement and rehabilitation, and prospecting license mining lease for minor minerals. अदर फीचर ऑफ पेसा एक्ट 1996, तो उसमें क्या क्या है तो देख लेते हैं. कंफर्मिटी विथ कस्टमरी लॉ, स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ पंचायत शैल बी इन कंफर्टिविटी विथ कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज. ग्राम सभा, every village shall have a gram sabha GS consisting of person whose name are included in electoral roll for panchayat at village level. अगला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा, तो क्या है देख लेते हैं. तो ग्राम सभा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंट वर्क. इफ विलेज आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, इशू सर्टिफिकेट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पावर टू कंट्रोल इन इंस्टीट्यूशन एंड functionaries in all social sector and local plans. Every GS to safeguard and preserve tradition and custom of people, their culture identity, community resource and the customary mode of dispute resource. Reservation क्या था, तो every पंचायत to have reservation of seats in proportion to community population, minimum of 150% with chairperson of panchayat at all level to be reserved for STs. फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल क्या है तो देख लेते हैं आगे करके. तो पहले देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 प्रोवाइड फॉर द फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. काउंसिल क्रिएशन क्या है, तो बाई एक्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर. ऑटोनॉमी क्या है, तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996. Self-governance through Gram Sabha for people living in 5th Schedule area. 5th Schedule Tribal Advisory Council has only advisory power. 6th Schedule में देखते हैं तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. काउंसिल क्रिएशन क्या है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ऑटोनॉमी क्या है, तो ग्रेटर ऑटोनॉमी कंपेयर टू फिफ्थ शेड्यूल एंड ADCs हैव मच वाइडर पावर दैन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है देख लेते हैं. पहला है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन VCs. राज्यसभा चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑल वुमेन पैनल फॉर VCs इन राज्यसभा. अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा द चेयरमैन नॉमिनेट्स from among the members of a panel of VCs. Any one of them can preside over the house in the absence of chairman or deputy chairman. However, they cannot preside over the house when the seat of chairman or deputy chairman is vacant. In this case, president appoints a member of the house to perform the chairman's duty. He or she have the same power as the chairman when presiding and holding office unit until a new panel of VCs is nominated. Parliament sessions. The Constitution of India did not mention the term special session. The term sometimes refers to sessions government has convened for specific occasions. Article 83 mandates that Parliament should meet at least twice a year. The gap between two sessions should not exceed 6 months. By convention, Parliament meet for 3 sessions in a year. However, the provision does not prevent the summoning of Parliament more often, and these extra sessions are referred to as special sessions. The Cabinet Committee on Parliamentary Affairs determines the date and duration of parliamentary sessions.
The president then summons MPs for the session. अगला immunity for president. Supreme Court SC held that government cannot claim immunity for application of law to a contract merely because one of the parties to it is the president. SC said Article 299 contract made by the Union of State in name of President or Governor does not give the government power to break the statutory law. Article 361 of the Indian Constitution grant immunity or protection to the President and the Governor of the country. President and the Governor are immune from court scrutiny for their action and duties in office. Conduct of the President can be reviewed only if either House of Parliament designate court or tribunal or any other body to investigate the charges under Article 61, Rule 176 and Rule 267, according to the rules of procedure and conduct of business in the Council of State. Rule 176 allows for a short duration discussion, not exceeding 2.5 hours on a particular issue. Under Rule 276, a Rajya Sabha MP has the special power to suspend the pre-decided agenda of the House with the approval of the chairman. अगला adjournment motion moved in the Lok Sabha for discussing a definite matter of urgent public importance with the speaker consent. It needs the support of 50 members to be admitted. It involves an element of censure against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. Discussion on an appointment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. अगला subordinate legislation और delegate legislation. Committee on Subordinate Legislation of Rajya Sabha released delay in framing of rules under various acts by the ministry's report. Scheduled legislation is the legislation made by an authority subordinate to the legislator. Most enactment delegate the power for making rules, regulations, bylaws, etc. to subordinate authorities like the executive. Need for subordinate legislation. Legislators have limitations of time. Thus, subordinate legislation is practical necessity. Enable experts and technocrats to provide detail with the framework of law. Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha, constituted under the Rule 204 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Council of State. Mandate क्या है तो scrutinize and report the House whether the power of subordinate legislation delegated by Parliament have been properly exercised. अगला Parliament security breach. Recently, Parliament security was breached where accused entered Lok Sabha on Victor's Pass and releases color gas canister emitting yellow smoke, restricted across to Parliament. Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha deals with admission, withdrawal and removal of stranger. It specifies that a speaker, whenever think fit, may order the withdrawal of stranger from any part of the house. Visitor to Parliament need security clearance from parliamentarians. अगला सरपंच पति. Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj recommended training and capacity building to curb prevalent concept like Sarpanch Pati or Pradhan Pati. It refers to practice of husband act as proxy for elected women and wield the actual political decision-making power. Women Reservation in Panchayati Raj Institution PRIs. 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. 1/3 of seat of PRIs and 1/3 officer of chairperson at all level of PRIs covered by Part 9 are reserved for women. Article 243D. Many states like Bihar, Kerala, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, etc. have made legal provision for 50% reservation of women among members and Sarpanch. As per Women and Male in India 2022 report, over
of the over 31.8 lakh ERs, nearly 46 over 14.5 lakh were women. अगला है कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज ULBs. Haryana cabinet has accepted state backward classes commission's report on proportion of reservation of backward class block A category in ULB. Article 243 T clause 6. There will be no bar or state legislator for making provision for reservation of seats in any municipality or office of chairperson in municipalities in favor of backward class of citizen. ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ OBCs इन लोकल बॉडीज के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010. उसमें 3 चीज़ हुआ था. क्या हुआ? पहला, सेट अप डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट ए रिगोरस empirical inquiry in nature and implications of backwardness in local bodies. दूसरा है specify the proportion of reserved required in local bodies in light of commission's proposal. तीसरा है ensure reservation for scheduled caste, scheduled tribes, OBC taken together does not exceed an aggregate of 50% of total seats. अगला हमारा तीसरा सेक्शन है सेंटर स्टेट रिलेशन. उससे पहला है रोल ऑफ गवर्नर. तो गवर्नर का रोल क्या है? तो न्यूज़ में ये क्यों रहा? तो पहले रिसेंटली केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर ओवर द पेंडिंग बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग बिल बिफोर गवर्नर क्या है? तो आर्टिकल 200. assent the governor is necessary. Assent of the governor is necessary for a bill to become a law. In this regard, the governor has been given some options. क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं. तो गवर्नर्स ओपिनियन और स्टेटस ऑफ द बिल. गिव असेंट टू द बिल देन बिल बिकम अ लॉ. विड्रॉ द असेंट देन बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ. तीसरा है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटर. इफ द स्टेट लेजिस्लेटर passes the bill in its original shape or in a modified form, the governor has to give the assent to re-enacted bill. और दूसरा क्या है? the constitution does not lay down any time limit within which the governor is required to return the bill for reconsideration if not insist on as soon as possible. और चौथा क्या है? reserve the bill for the consideration of the president. Any bill which is in the option of the governor would, if it become law, so derogate from the power of the high court as to endanger the position which that court is by this constitution designated to fill. Reserving bill for president. Article 201. President can either give his assent or withdraw the assent. इसमें देखते हैं और क्या है? तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेटर with his or her message. Such bill, if re-enacted by the state legislator with or without amendment, is presented again to the president. यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर और जुडिशियल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर. तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर. आर्टिकल 153. There shall be a governor for each state. Article 154. The executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him as per the Constitution. Article 155. Governor of a state shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. Article 161. Governor shall have the power to grant, pardon, deprive, etc. Article 163. There shall be Council of Ministers (COM) with the Chief Minister as at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under the Constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. Article 164. The governor appoints Chief Minister and other ministers. Article 213. Governor may promulgate the ordinance under certain circumstances. Article 217. Governor is consulted for appointment of judges of High Court. उसी तरह से देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू गवर्नर क्या क्या तो देख लेते हैं. तो पहला है शमशेर सिंह केस 1974. Supreme Court held that the governor does not exercise discretionary power while
withholding assent or returning a bill to the state legislator. Next is Nawam Rabia case 2016. If a governor exercises his discretion beyond his jurisdiction or power, it would fall under the subject matter of judicial review. फिर से नवाम राबिया केस 2016 फिर से उसमें है. If a governor exercise his discretion beyond his judicial power, jurisdiction or power, it would fall under the subject matter of judicial review. वो रिपीट हो गया, सेम है. अगला रिसेंट जजमेंट कौन कौन सा, तो स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023. If a governor decides to withdraw assent to a bill, then he or she has to return the bill in the legislature for recommendation. Such a bill cannot be kept with the governor indefinitely. Vice Chancellor case 2023. Governor acting as a university chancellor are not bound by the aid and advice of the COM. Tamil Nadu Governor case 2023. The governor cannot refuse the bill to the president after the assembly has reenacted the bill following the governor's withdrawal of assent. अगला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया. अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो देखते हैं. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड सो नाइदर इज above the other. It envisages the nation and state agencies undertake government functions jointly rather than execute exclusively. Constitutional provision to promote cooperative federalism in India. तो क्या क्या है, तो 7th schedule which demarcates central, state and concurrent list based on the principle of subsidiarity. All India service under Article 21312. Integrated judicial system to enforce both state as well as central law. Interstate Council under Article 263 to discuss and investigate the subject of common interest between the center and the state. Article 261 provides that full faith and credit shall be given throughout the territory of India to all the public act, records and judicial proceeding of union and every state. अगला zonal council were established as statutory body under the State Reorganization Act of 1956 to ensure coordination. Article 280 Finance Commission for recommending the distribution of financial resource between the union and the state. Article 279A GST Council involving members from union and state responsible for deciding the rates of GST and the modalities of its implementation. अगला स्टेप सेकेंड टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया. क्या क्या है, the share of states in central tax revenue has been increased from 32% to 42% after the recommendation of 14th Finance Commission. Restructuring of centrally sponsored scheme. अगला फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम अंडर उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय स्कीम. अगला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग नीति आयोग एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. वेरियस स्टेप्स टेकन बाय नीति आयोग आर. पहला है सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. दूसरा है लॉन्चिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. तीसरा है फ्रेमिंग मॉडल लॉज फॉर लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स. Next is area specific interventions for the northeastern and Himachal state and island development. Next is subordinate action for transferring human capital SAT program to initiate transformation in the education and health sector in India. Our next topic is interstate border dispute, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लगी. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, उन तक इसे जरूर पहुँचा ताकि उसका रिवीजन अच्छे से हो सके. और इसमें हम लोग सारा का सारा बुक करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बस हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें और रिवीजन करते हैं. मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के पीटी 365 सीरीज़ में.
जिसमें आज हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं और यह कंटिन्यू सेशन रहेगा। पहले भी इसके 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। और इसमें हम लोग पूरा का पूरा ये बुक करने वाले हैं, जो कि काफ़ी समय से हम लोग का इंतजार था इस बुक का, और ये फाइनली आ गया और अब इसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसके पहले का वीडियोस लेक्चर नहीं देखे तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसे जाइए आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और इसी के साथ हम लोग विजन IAS ये वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर कर रहे हैं, उसका भी पूरा कंपाइलेशन बुक आया हुआ है, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसे भी आप लोग अगर नहीं देखें तो उसे भी देखिए। और मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि इस चैनल पे जितना हो सके उतना, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके UPSC मटेरियल मिलेगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्रीलिम्स देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर में बहुत अच्छा हेल्प मिल सके और वो भी करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आज का हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होगा, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो न्यूज़ में ये क्यों था, तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू एंड ए डिकेड लॉन्ग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। मेथड टू रिसॉल्व डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स क्या है, तो जुडिशियल रिड्रेसल आर्टिकल 131 प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल टू the exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute। इसमें क्या है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड वन और मोर स्टेट और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड any state or states on one side and one or more the other states on the other, or between two or more states। इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, तो आर्टिकल 263 गिव पावर टू द प्रेसिडेंट to set up an interstate council for the resolution of dispute between states। it have the duty of, इसका क्या क्या ड्यूटी है, तो inquiring into the adversing upon disputes which may have arisen between states, or investigating and discussing subject in which some or all the states or the union have a common interest, or making recommendations on such subject along with recommendation for the better coordination of policy and action to that subject। अगला zonal council, they are established by the State Reorganization Act of 1956 and have an advisory role to promoting cooperation and coordination between states and union territory at the center। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टेट्स में बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो आइए हम लोग एक एक करके सब देख लेते हैं। तो पहला है हरियाणा हिमाचल प्रदेश ओवर परवाऊं रीजन एंड पंचकुला। फिर दूसरा है महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन over Belgaum district with a large Marathi speaking population। it has part of Bombay presidency before coming under Karnataka in 1956। तीसरा हिमाचल प्रदेश लद्दाख over सारचू lying along Leh Manali highway। चौथा उड़ीसा वेस्ट बंगाल has issues in the past along its mainland boundaries and over Kanika Sands Island in the Bay of Bengal। पांचवा है हरियाणा पंजाब ओवर चंडीगढ़। फिर छठा है कर्नाटका केरल ओवर कजारगोंड पार्ट ऑफ केरला विथ मेनी कन्नड़ स्पीकिंग पीपुल। और सातवां है गुजरात राजस्थान ओवर मांगद हिल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं जोनल काउंसिल क्या है। चेयरपर्सन कौन है, तो यूनियन होम मिनिस्टर। 5 जोनल काउंसिल्स कौन कौन सा है, तो नॉर्थन में हो जाएगा हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ लद्दाख। सेंट्रल में हो जाएगा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। ईस्टर्न में हो जाएगा बिहार झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न में हो जाएगा गोवा गुजरात महाराष्ट्र दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सदर्न में हो जाएगा आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरल तमिलनाडु तेलंगाना अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। फिर अगला टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो वाटर डिस्प्यूट क्या है, काफ़ी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। देखिए न्यूज़ में ये क्यों रहा। Recently, the Union Cabinet approved the terms of reference to Krishna Water Dispute Tribunal 2 KWDT2 under the Interstate River Water Dispute ISRWD Act 1956. Also, the Supreme Court criticized the Punjab government for its slow process in constructing the Satluj Yamuna Link SYL canal mechanism to deal with interstate water dispute under 7th schedule of Constitution। स्टेट लिस्ट में क्या है, तो एंट्री 7 वाटर दैट इज वाटर सप्लाईज इरीगेशन एंड कैनाल ड्रेनेज एंड एम्बाक्समेंट वाटर स्टोरेज etc सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 56
of list 1. Article 226. Parliament by law may provide for the adjudication of any dispute with respect to the use, distribution or control over interstate river water or river valley. Accordingly, Parliament has enacted 2 laws. कौन सा? तो पहला है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ISWD एक्ट 1956. स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिफर द डिस्प्यूट टू अ ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन. और दूसरा रिवर बोर्ड एक्ट 1956 सेटिंग अप ऑफ river board by the central government for the regulation and development of interstate river and river valley. Article 226 deters the Supreme Court for adjudicating interstate river water dispute. However, Article 136 empowers the Supreme Court to hear appeal against the tribunal order. नेशनल वाटर पॉलिसी 2016 क्या है? तो एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, इनइक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ ए यूनिफाइड preservative in water use and management. Union list under entry 56 regulation and development of interstate river water and river valleys. In the context of interstate river water sharing, Supreme Court had earlier referred to international rules like कौन कौन सा? तो Helsinki Rule of 1966 recognize establish equitable use of water by each basin state taking into consideration the socio-economic need and availability of resource. अगला है Campion Consolidation of ILA Rule 1966 to 1999 advocates the inclusion of water of an aquifer, that is underground water or fossil water intercepted by the boundary between 2 or more states while determining the share of basin state over an interstate river. अब यहाँ पे अबाउट SYL कैनाल क्या है? सतलज यमुना लिंक कैनाल प्लान इन 1966 इज ए 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल फॉर शेयरिंग वाटर ऑफ रिवर एंड ब्यास रावी एंड ब्यास रिवर बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, ऑफ विच 122 किलोमीटर वाज टू बी इन पंजाब एंड 92 किलोमीटर इन हरियाणा. हरियाणा completed its stretch of SYL canal in 1980 while Punjab keep citing Ripon principle and the non-availability of its water. Ripon principle states that the owner of land adjacent to the water body have the right to use water. About Krishna water dispute तो देख लेते क्या है. तो in 1969 Krishna water dispute tribunal 1 KWDT was set up under the ISRWD Act 1956 and KWD2 was instituted in 2004. KWDT2 will distribute the Krishna water allocated to undivided Andhra Pradesh between Telangana and Andhra Pradesh. Krishna is an eastern flowing river that originates at Mahabaleshwar in Maharashtra and merge with the Bay of Bengal flowing through Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. In 2014, after the creation of Telangana, Andhra Pradesh asked to include Telangana as a separate part at KWDT. However, Maharashtra and Karnataka argues that Telangana should be allocated water from Andhra Pradesh share as it was created from later bifurcation. यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिब्यूनल सेटअप फॉर अंडर ISRWD एक्ट 1956. कौन कौन सा ट्रिब्यूनल है? तो यहाँ पे है रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल स्टेटेड कंसर्न्ड पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. अगला नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट्स कंसर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. आप लोग यहाँ रिवर चैनल देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा कौन सा किधर है. अगला है महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट्स कंसर्न कौन कौन सा? गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 स्टेट कंसर्न कौन है? तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. वसुधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट कंसर्न क्या है? आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट कंसर्न कौन है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. काबरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 स्टेट कंसर्न कौन है? तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी. हमारा अगला टॉपिक जुडिशरी से रिलेटेड है. तो जुडिशरी जो भी न्यूज़ में होगा वो यहाँ पे है. आइए देख लेते हैं एक एक करके. पहला जुडिशियल अपॉइंटमेंट. तो न्यूज़ में क्यों रहा ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग ए कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट इनऑर्डिनेट डिले by the center in judge's appointment said that appointment proposal can't remain in limbo
and the government must either notify those appointments or send them back, citing specific objections. Appointment of judge in higher judiciary, तो कैसे होता है देख लेते हैं. तो judges are appointed through a collegium. Article 124 clause 2 and 217 governs the appointment of judges in Supreme Court and High Court respectively. It has evolved through judgment of Supreme Court refers to as three judges case and pronounced in 1981, 1993 and 1998. Supreme Court Collegium includes CJI and four other senior most judges of the court at that time. Collegium for the appointment of judges to the High Court is led by the CJI and two other senior most judges of the Supreme Court. इसमें क्या होगा, तो इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट वेस्टेड with the High Court Collegium (HCC), who send a view to the Supreme Court Collegium. HCC consists of Chief Justice of High Court and two senior-most judges. Role of government in appointment of judges. Under Memorandum of Procedure, government can get an inquiry conducted by Intelligence Bureau for candidates recommended. Government can also raise objection and seek clarification regarding collegium choice. However, if the collegium retreats same name, government is bound to appoint them as judge. अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं. तो आर्टिकल 114 क्लॉज 2, सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court as the President may deem necessary. In the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted. Article 217. High Court judge shall be appointed by the President and after the consultation with the Chief Justice of India, the Governor of State, and in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of the High Court. फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी क्या है, तो फर्स्ट जज केस 1981. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द CJI टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफर्ड फॉर cogent reasons, thereby giving greater say to executive. Second judge case 1993. Supreme Court advocates on record association of via VOI. It led to the creation of the collegium system. The Supreme Court said that the CJI should be given the prominent role in appointment. Third judge case 1998 related to the meaning of the term consultation under the Article 124 and 217. The question was whether the sole opinion of CJI could be itself constitute a consultation. In response, the Supreme Court laid down guidelines for the functioning collegium system. अगला न्यूज़ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS. न्यूज़ में क्यों रहा, तो रिसेंटली ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर सेलिब्रेशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS टू रिक्रूट जजेस. अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है, तो AIJS इज अ रिफॉर्म दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट of judges at the level of additional district judge and district judge of all states. Genesis of AIJS. The idea of AIJS was first proposed by the 14th report of Law Commission of India on judicial reform in 1958. Constitutionality क्या है, तो the provision of AIJS was included in Article 312 of the Constitution through the 42nd Amendment in 1976, but it still requires a bill to decide on its board counters. Present status of recruitment of judge in lower judiciary क्या है, तो आर्टिकल 233 and 234 of the Constitution of India deal with the appointment of district judge along with lower judiciary and place it in the domain of the states. All judges of the lower judiciary up to the level of district judge are selected through the provincial civil services judicial exam is in most of the states. The selection process is conducted by the State Public Service Commission and the concerned High Court, as High Court exercise jurisdiction over the subordinate judges in the state. अगला है लीगल एड. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल
Public Grievances, Law and Justice presented a report on review of the working of legal aid under the Legal Service Authorities Act 1987. Legal aid क्या है? So legal aid refers to a free legal service to the poor and needy people who cannot afford the service of a lawyer for the conduct of the case in any court. Initiative for legal aid in India कहाँ से कब शुरू हुआ? तो Legal Service Authority LSA Act 1987 provide a statutory framework of legal aid in India. Under the Act, the National Legal Service Authority (NALSA), State Legal Service Authority (SALSA), and District Legal Service Authority (DLSA) are established at the national, state, and district level, respectively. Lok Adalat is an alternative dispute redressal (ADR) mechanism under the Act, where disputes pending in the court of law or at the pre-litigation stage are settled amicably. Paralegal volunteers (PLVs), trained person who assist the LSAs and Lok Adalat in providing free legal aid to the needy people. Supreme Court Legal Service Committee SCLSC, constituted under Section 3A of LSA Act 1987 to provide free legal service to poor, underprivileged and marginalized. Patron-in-Chief of SCLSC, Chief Justice of India. Members क्या है? तो चेयरमैन, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 9 members nominated by Chief Justice of India. Designing innovative solution for holistic access to justice, दिशा स्कीम. इसके अंदर क्या था? तो introduced by the Department of Justice to create awareness through the use of technology and developing simplified information, education and communication (ICE) material for the masses. Its component include क्या क्या include करता? तो न्याय बंधु, to create a pan-India framework for dispensation of pro bono legal services. दूसरा है टेली लॉ for mainstreaming legal aid to marginalized community through the common service centers CSCs. अगला है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम LLAP to enable the vulnerable section of society to have information about their legal rights and entitlement. अगला है न्याय मित्र स्कीम, launched in 2017 to facilitate the district judge in getting more than 10-year-old pending court case disposed by providing legal aid to the litigants. Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme provide legal services to middle income group citizen whose gross income does not exceed 60,000 per month or 7,50,000. फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू लीगल एड. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पहले देख लेते हैं. आर्टिकल 39A provides that states shall provide free legal aid by suitable legislation or scheme. अगला है आर्टिकल 22 क्लॉज 1. Every individual who is detained or imprisoned is guaranteed the right to legal representation by a lawyer of their choice. It implicitly recognizes the right to legal assistance. अगला है judicial pronouncement related to legal aid. M.H. Hoskot versus State of Maharashtra 1978. Supreme Court said the right to free legal aid is the duty of the government and is an implicit aspect of Article 21. Hussain Nara Khatun versus State of Bihar 1979. Supreme Court held that legal services are an essential ingredient of just, fair and responsible procedure under Article 21. यहाँ पर देखिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये क्या है? तो ये पहले तो एक स्टेचुअरी बॉडी है. इसके अंदर देखते हैं क्या है. तो जेनेसिस इसका क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. कंपोजिशन क्या है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द पैट्रन इन चीफ एंड अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. फंक्शन क्या है? तो इट प्रोवाइड free legal services to the weaker section of society and organizes Lok Adalat for amicable settlement of dispute. Eligible litigants as per section 12 of
LSA Act 1987. Women and children, member of scheduled caste or scheduled tribe, industrial workman, person with disability or in custody, etc. Person who have annual income of less than the amount prescribed by the represented respective state government for cases in any court other than the Supreme Court, or less than rupees 5 lakh if the case is before the Supreme Court. हमारा अगला टॉपिक है मीडिएशन एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड assent to the passed Mediation Act 2023 seeking to promote mediation as a preferred mode of alternative dispute resolution ADR in India. About alternative dispute resolution ADR क्या है? तो it refers to a different way of people can resolve dispute without a trial. Refer infographic. ओके देख लेते हैं. अदर स्टेप टू प्रमोट ADR इन इंडिया क्या है? तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. अगला है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC एक्ट 2019 फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NDIAC फॉर facilitating institution arbitration. Next is Commercial Council Act 2015 provide for such commercial court to adjudicate commercial dispute. Next is Singapore Convention on Mediation is a uniform and efficient framework for international settlement agreement resulting for mediation. तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 types of ADR. तो इसमें देख लो पहला conciliation. इसमें हो जाता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट विद द पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेटलमेंट ऑप्शन. नेक्स्ट इज नेगोशिएशन. ट्रेडिशनली occur directly between the parties and the council and their council and it does not involve a neutral third party. Next is mediation, a very flexible process that can be effectively used at any time during the course of the dispute. Next is collaborative law. Both parties are represented by a collaborative authority and both parties agreed not to litigate. Next is arbitration. A neutral arbitrator render a decision called an award after there has been a presentation of evidence. Key highlight of Mediation Act 2023. Key highlights क्या है? तो पहला है define mediation. It includes expression mediation, pre-litigation mediation, online mediation and community mediation. Parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of the third person referred to as a mediator. Voluntary pre-litigation mediation. Parties can attempt to settle civil or commercial dispute by mediation before approaching any court or certain tribunal. नेक्स्ट इज डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मेडिएशन. लिस्ट इंक्लूड मतलब इसमें क्या क्या है? तो पहला है रिलेटिंग टू क्लेम्स अगेंस्ट माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. दूसरा है इंसॉल्व इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. थर्ड इज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी. अगला टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. मेडिएशन टू टेक प्लेस विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ कंपेंट jurisdiction unless parties agrees otherwise or undertake mediation in online mode. अगला है timeline for conducting mediation must be completed within 120 days which may be extended by another 60 days with the consent of the parties. A party may withdraw for mediation after 2 sessions. Court annexed mediation must be conducted as per the rule framed by the Supreme Court or High Court. अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो क्या कब हुआ था? तो इसमें क्या क्या है? तो कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर विथ एक्सपीरियंस इन द मेडिएशन और ADR, 1 पार्ट टाइम मेंबर इंक्लूडिंग द लॉ सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एंड 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर. डिफाइंस मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर क्या है? तो एज अ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द MCI फॉर कंडक्टिंग मेडिएशन. Mediation can be done by the authority constituted under the Legal Service Authority Act 1987. Also, conduct of community mediation क्या है?
तो to resolve dispute likely to affect the peace and harmony among residents of the locality by a panel of 3 mediator. Enforceability क्या है, तो agreements resulting for mediation with will be binding and enforceable in the same manner as court judgment. Verdict can be challenged before a competent court within 90 days. Mediated settlement can be challenged on ground of fraud, corruption, impersonation and dispute and not fit for mediation only. अगला है लोक अदालत. तो ये न्यूज़ में क्या था, तो लोक अदालत इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ADRM. ADRM involves various method of resolving conflict outside of the traditional court system. They provide a speedy, cheaper and more amicable approach to resolve conflict. Key aspect of लोक अदालत क्या है, तो establishment under Legal Service Authority Act 1987. टायर क्या है, तो constituted at a different level, namely नेशनल लोक अदालत, स्टेट अथॉरिटी लेवल, हाई कोर्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल एंड तालुका लेवल. नेशनल लोक अदालत are held at regular interval, whereas on a single day lok adalat are held throughout the country. Mobile lok adalat are also organized. Jurisdiction इसका क्या है, तो dispute या case pending in the court of lower or at pre-litigation state. नेचर ऑफ केस क्या होगा, तो सिविल केस होगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा, लैंड डिस्प्यूट होगा, पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, लेबर डिस्प्यूट ETC एंड नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस. पावर इसका क्या है, तो हैव द सेम पावर as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure 1908. Decision awards are final and binding on all parties. No appeal shall lie in any court against its award. Model Prison Act 2023, Prison Acts. इसमें न्यूज़ में एक रहा, तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड प्रिपेयर्ड द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 दैट विल रिप्लेस द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894. व्हाट proposal are included under the model prison act 2023. क्या proposal है, to ensure good conduct. इसमें provision for the grant of payroll, furlough and remission to prisoners. Payroll is a system of conditional release of a prisoner with suspension of the sentence for a specific period. Furlough क्या है, तो is given in case of long term imprisonment. The period of furlough generated to a prisoner is treated as a reduction of his sentence. Bail means procurement of release from prison of a person awaiting trial or an appeal for reformation and rehabilitation. Bring about attitudinal change toward prison. Vocational training and skill development. अगला है for better safety and security. Separate accommodation of women and transgender inmates. Use of technology in prison administration, establishing high security jail. Other measures क्या है, तो provision for and open semi-open jail have also been inserted. Measures for prison to video conference with court have also been introduced. Along with the Prison Act 1894, the Prisoners Act 1900 and the Transfer of Prisoners Act 1950 have also been reviewed and their relevant provision has been assimilated into the Model Act. About Prison Act 1894 क्या था, तो it was the first legislation that governed the management and administration of the prison in India. It is based on recommendation of the Prison Discipline Committee appointed by Lord Macaulay in 1936. It defined a prison as any jail or place used permanently or temporarily for the detention of prisoners, excluding close custody and subsidiary jail. It also laid down provision for the prisoners' employment, health and visits. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड रिलेटेड टू प्रिजन, और इसी तरह से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन एक्ट. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं. तो शेड्यूल 7, प्रिजन्स या प्रिजन्स डिटेंड देयर इन इज द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 4 ऑफ अ स्टेट ऑफ लिस्ट 2. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन एंड प्रिजनर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. आर्टिकल 39A enumerates the constitutional right to the accused to be provided free legal aid service. Next is other important act. कौन सा है, तो Repatriation of Prisoners Act 2003.
क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इसी तरह से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन्स राइट क्या है, तो मोहम्मद गयासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1977 SC 1926। The court strongly endorsed the importance of the hospital setting and the therapeutic goal of imprisonment। अगला प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड देयर इज नो compulsive need for feeder change a person's limbs। Next is Sheila Barsi versus State of Maharashtra related to custodial violence to women prisoners in jail। यहाँ पे कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म देख लेते क्या था, सर अलेक्जेंडर कार्ड्रिव कमेटी 1999-20 और अगला है मुल्ला कमेटी 1980 to 1930। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कौन कौन सा देख लेते, तो आर्टिकल 142, तो इसमें क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट कुड अंडर आर्टिकल 142 डायरेक्टली ग्रांट डिवोर्स इन केस वेयर मैरिज हैज़ irrelevantly broken down, dispensing with period prescribed under Hindu Marriage Act HMA 1955। Article 142 provides Supreme Court power to do complete justice between parties where at times law or statute may not provide a remedy। While power under Article 142 are sweeping in nature, Supreme Court has defined its scope and extent through various judgment। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 143 क्या है, तो प्रेमचंद्र गर्ग केस 1962 डिमार्केट कॉन्ट्यूर फॉर पावर अंडर आर्टिकल 142 अंडर कार्बिड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इन 1991 while highlighting wide scope of article 42 ordered compensation for the victim। Supreme Court Bar Association versus Union of India 1998 powers under article 142 also supplementary and could not be used to supplant or override the substantive law। Next is doctrine of primacy estoppel। In the hearing related to Agnipath scheme, plaintiff party moving court in a civil action cited doctrine of primacy estoppel। Primacy estoppel is a concept developed in contractual law। It essentially prevents a primacer from backing out of an agreement on the ground that there is no consideration। It is invoked by a plaintiff to ensure execution of a contract or seek compensation for failure to perform the contract। नेक्स्ट इज नार्को एनालिसिस टेस्ट, तो इसमें क्या था, रिसेंटली रेसलर प्रोटेस्टर्स इन दिल्ली हैव आस्क्ड टू अंडरगो नार्को टेस्ट प्रोवाइडेड इट इज मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एज पार्ट ऑफ नार्को टेस्ट सोडियम पेंटोथाइल also called truth serum is injected into a person which lowers a person's self consciousness allowing them to speak without inhibition। The Supreme Court in Selvi versus ORS versus State of Karnataka in Karnataka and ANR 2010 rules that narcoanalysis, brain mapping and polygraph test cannot be conducted on any person without his or her consent। The judgment was based in view of Article 20 Clause 3 right against self-criminalization and Article 21 relate to the life and personal liberty। Narco analysis report is not admissible as primary evidence in the court। However, any information that is subsequently discovered with the help of voluntary administrator test result can be admitted। Next is recusal by judges। Supreme Court SC judge refers to recuse himself from hearing a plea from a former Indian Police Service IPS officer। Whenever there is potential conflict of interest, a judge can recuse or withdraw from the case to prevent the perception of being biased। India has no codified rule governing recusal
and the decision to recuse rests solely on the recursion and discretion of the judge. If a judge recuses himself, the case is listed before the Chief Justice for allocation of an alternate bench. Kinds of recusal क्या है तो automatic when a judge himself withdraw from the case and when a party raises a plea for recusal highlighting the possibility of bias of personal interest of the judge in the case. अगला advocate on record AOR system in Supreme Court. AOR is a lawyer in the Indian legal system who is registered and authorized by Supreme Court to represent clients in that court. The Advocate Act provides two kinds of advocate, that is senior advocate and advocate. However, the SC in the exercise of its rule-making power under Article 145 made a provision for AOR system. Supreme Court rules 2013 prescribe eligibility criteria for an AOR. Only AOR is entitled to file any matter or document before the Supreme Court. Senior advocate is not entitled to appeal without AOR in Supreme Court. Fast Track Special Court FTSC's scheme. Union Cabinet approved continuation of Fast Track Special Court FTSC scheme under March 31, 2026. Launched in 2019, FSTC is a centrally sponsored scheme and implemented by Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Central share is to be founded by Nirbhaya Fund aimed at enhancing the safety and security for women. FTSC is designed as dedicated court were established by for hearing rape and protection of child for sexual offense act POXO Act cases. Enactment of Criminal Law Amendment Act 2018, which include stringent punishment including health penalty for rape offender, lead to the creation of FTSCs. FTSCs are linked to National Judicial Data Grid. Nari Adalat. Nari Adalat is a part of Sambhal sub scheme under Mission Shakti, which operates under Ministry of Women and Child Development. Mission Shakti aims to strengthen women's safety, security, and empowerment. Nari Adalat provide women with an alternate grievances redressal mechanism for resolving cases of petty nature, harassment, curtailment of rights, etc., faced by women at Gram Panchayat level. This platform will be utilized for engaging with public for awareness generation, getting feedback for improvement in scheme and for effective public delivery of services. अगला है न्याय विकास पोर्टल. न्याय विकास पोर्टल has been created by Ministry of Law and Justice for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme CSS for development of infrastructure for judiciary. About न्याय विकास क्या है तो Department of Justice has been implementing CSS for development of infrastructure facilities for district and subordinate justice since 1993 and 94. Central assistance is provided to the state government UT administration for construction of court hall and residential unit for judicial officers, judges of district etc. Funding का है तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट 19:10 रेशियो एंड यूनियन टेरिटरी 100%. रिमेनिंग स्टेट क्या 60-40 रेशियो पे. Justice clock. It is an electronic signage system which have been installed across the court complex of high courts. The initiative was inform stakeholders about court-related key parameter and bring awareness among public by providing bird eye view on court-related data. Technology in judiciary क्या है तो Supreme Court issue direction to all the High Court for ensuring digitalization of lower court record. Other initiative taken क्या है तो e-court mission, a mission mode project for digitization of judiciary, interoperable criminal justice system ICJS to enable seamless transfer of data and information among stakeholders like court, police, jails. Fast and secure transmission of electronic record faster by Supreme Court, a software to transmit court orders swiftly and securely through electronic mode. अगला है सुभाष. सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुबंध
Anuvad software to translate English judgment into regional language. E-SCAR portal, it provides the digital version of the apex court judgment in same manner that they are reported in the official law report. Next is India Justice Report. The third edition of the report was released by Tata Trust in collaboration with representatives from several civil society organizations, including the Center for Social Justice, Daksh, Vidhi Center for Legal Policy, etc. The report assesses, accesses, and ranks each state progress in capacitating its major justice delivery mechanism, the judiciary, police, prison, and legal aid. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्शन से रिलेटेड सारे न्यूज़ यहीं पे हैं, तो आइए एक एक करके इसे देख लेते हैं। पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। फिर से देख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 की प्रोविजन क्या है? तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो CEC एंड CECs shall be appointed by president of the on the recommendation of selection committee. सिलेक्शन कमेटी के मेंबर क्या है? तो एक सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, एक होगा प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। अगला है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर है सर्च कमेटी headed by the Ministry of Law and Justice shall prepare a panel of 5 persons for consideration of the selection committee. Eligibility criteria क्या है? तो person who are holding or have held a post equivalent to the rank of secretary to the government of India and should a person of integrity who has knowledge of and of experience in management and conduct of elections. Salary क्या है? तो equal to the salary of judge of Supreme Court. Terms of office क्या है? तो ECs, CEC and other ECs shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumes his office or till he attain the age of 65 years, whichever is earlier. CEC and ECs shall not be eligible for reappointment. Where an CE is appointed as CEC, his term of office shall not be more than 6 years in aggregate as the EC and the CEC. Conduct of business क्या है? तो all businesses of the election commission is to be conducted unanimously. In case of a difference of opinion between the CEC and the other ECs or any matter, it shall be decided through the majority. Removal and resignation. CEC can only be removed from his office in manner and on grounds similar to that of a Supreme Court judge. An EC can be removed from the office upon the recommendation of CEC. The CEC or any EC may resign at any time by writing to the President. Constitutional and legal safeguard for EC and judicial pronouncement related to CEC and EC's appointment. तो constitutional पहले देख लेते हैं। तो Article 342, the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority, administers union and state election and the office of the President and Vice President in India. Article 324, Clause 2, the President of India is empowered to appoint the CEC and ECs. It empowers the President of India to fix from time to time the number of election commissioners other than the CEC. Judicial pronouncement related to CEC and EC's appointment क्या है? तो अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, सुप्रीम कोर्ट ruled that the CEC and EC will be chosen by a committee comprising the Prime Minister, the Leader of Opposition in Parliament and the Chief Justice of India. Till this SC ruling, Election Commission and CEC had been appointed by the President after recommendation from the government. Our next topic is aspects of election process and reform. तो उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाला है, क्योंकि उनके लिए करंट अफेयर काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी
और उन्हीं के लिए यह वीडियो स्पेशली बनाया ही जा रहा है जो इस बार यूपीएससी देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सकेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।